The animals were selected from large stock provided by nature as milch animals. They also provided us draught power, transportation, meat, eggs. Animals का बहुत wide role होता है. Animals अगर आप देखेंगे तो आपको transportation में help करते हैं. They also provide you with the food items as well. The fish provide nutritive food. Many insects helps in the pollination of crops and fruit trees and exert biological control on such insects which are very harmful. Every species has a role to play in the ecosystem. हर species का role होता है ecosystem के अंदर. There is no single species which can live in isolation. Even we individuals, even we as human beings are species. And we also cannot live in isolation. Can we live in isolation? No. Can we study in isolation? No. राइट सो इन द सिमिलर मैनर जो इकोसिस्टम है इकोसिस्टम में आपको जितने भी स्पीशीज मिलते हैं दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ठीक है दे आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हेंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल देयरफॉर आप ये देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज चाहे वो प्लांट स्पीशी हो एनिमल स्पीशी हो इकोसिस्टम हो इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं आपके एनवायरमेंट में एंड जैसे ही ये बैलेंस आपका डिस्टर्ब होता है पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. As has been mentioned earlier, due to the excessive exploitation of the plants and animals, resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. सीधी सी बात है ना ह्यूमंस जो हैं वो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं इलीगल एक्टिविटीज करते हैं हंटिंग करते हैं अननेसेसरी आप देखेंगे कि लैंड को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाता है डेंस फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाते हैं सो दैट इज व्हाट यू आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम. अगर आप पूरे एक एरिया में बहुत ज्यादा वहां पर घने जंगल है डेंस फॉरेस्ट है तो दे आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस. आप अगर इसको क्लियर करते हैं पूरा का पूरा ये पैच अगर आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पर जितना भी बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है. ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो आपने डिस्टर्ब कर दिया है बिकॉज आपको पता है कि जो ट्रीज हैं वो आपके प्रेसिपिटेशन को रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं सॉइल इरोजन में प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं. ऑल्सो यू सी यहाँ पर आपको एनिमल्स मिलते हैं प्लांट स्पीशीज मिलते हैं सो दैट इज व्हाट दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और अगर आपने फॉरेस्ट ही क्लियर कर दिए पूरा का पूरा ये पैच क्लियर कर दिया देन दिस कंप्लीट एरिया विल गेट डिस्टर्ब और यहाँ जो एनिमल स्पीशीज है आपके प्लांट स्पीशीज है वो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है. About 13,000 plant species are endangered and 20 species are extinct. ऐसी 20 species हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं. They are not even visible. ठीक है. Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. The main causes for this major threat to nature are hunting by the greedy hunters for commercial purpose. आप देखते हैं कि commercial purpose economic point of view से money के point of से अगर आप देखें तो लोग बहुत सारी hunting activities करते हैं. And even today at present there are communities जो hunting activity करती हैं और वो उनका मेजर ऑक्यूपेशन होता है ठीक है दैट इज वाई दे ऑल डू इट. Pollution due to the chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and inhabitation are also responsible for the imbalance. आप देखते हैं कि इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर deforestation करा जाता है. Deforestation, what does the word deforestation means? Deforestation means cutting of trees on a very large scale. ये वर्ड आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? सो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल. जब आप बहुत बड़े एरिया पर ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं दैट इज योर डिफॉरेस्टेशन. To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps. आप देखते हैं कि सरकार हर साल काफी सारे स्टेप्स लेती है काफी सारी एक्टिविटीज करवाते हैं कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं
स्कूल लेवल पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारी प्लांटेशन एक्टिविटीज, एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट हो सके स्टूडेंट्स में, राइट? सो you can see that there are some of the steps written over here mentioned in your book. वो कौन कौन से steps हैं हम देखते हैं. फर्स्ट स्टेप देखिए, 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. अगर आप देखें तो biosphere reserves बनाए गए हैं. Reserves basically जहां पर फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करा जा रहा है जो कि खत्म हो रही है. 4 out of these, the Sundarbans in the West Bengal, Nanda Devi in the Uttarakhand, Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and Nilgiris, that is in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu, have been included in the World Network of Biosphere Reserves. यहाँ पर आपको Biosphere Reserves मिलेंगे, whereby you see that the species of flora and fauna are preserved. Then we can see second point here, financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. बहुत सारे botanical gardens बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है. सिंस 1992 आप ये देखते हैं कि वर्क करा जा रहा है, इम्प्लीमेंट भी होता है और काफी काम हुआ भी है. Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard, and many other eco-developmental projects have been introduced. बहुत सारे हर साल projects introduce करे जाते हैं. Save Tiger project भी introduce करा जाता है. ठीक है, इस तरीके के आप देखते हैं कि ऐसे projects, ऐसे campaigns introduce करते हैं so that इन species को protect करा जाए, बचा सकें. 89 national parks, 490 wildlife sanctuaries, and zoological gardens are set up टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज. हमारे नेचुरल हेरिटेज को संभालना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है, सो फॉर दैट मैटर आप देखते हैं 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं. ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल. अगर ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है तो यू can't even think of the consequences that we will have to bear one day. ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, अभी कोविड-19 से आप सब बहुत अच्छे से यू हैव जस्ट मेट कोविड-19 विद वेरी बहुत अच्छे से आपने इसको देखा है. तो दैट इज व्हाट कि किस तरीके से अगर कुछ भी चीज इम्बैलेंस होती है, जरा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? इसी तरीके से अगर हम इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर इवन आवर सर्वाइवल. अगर हम किसी भी एक नेचुरल फीचर पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस देगा ही देगा, राइट? अगर आप माउंटेन्स पे बिल्डिंग बना रहे हैं, जबकि आपको पता है कि माउंटेन्स एक ऐसे रीजन है, एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर बिल्डिंग्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है. सो यू आर एक्चुअली व्हाट, यू आर डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेनियस एरियाज. आप माउंटेनियस एरियाज के स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं. आप देखते हैं कितने हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स में रोड्स बनाई जाती हैं सो दैट कंफर्टेबली आप पहुंच सके, बट वहां पर लैंड स्लाइड्स भी बहुत कॉमन फीचर है. एवरी टाइम आप देखते हैं कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होती रहती है. ठीक है, बिकॉज आपने क्या करा है, उस एरिया को डिस्टर्ब कर दिया है, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करा है. इट इज पॉसिबल if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. ये possible है कि हम हमारे environment को harm नहीं पहुंचाएं. ठीक है, because government has to take out many policies in order to stop harming the environment. And recently अगर आप देखें तो प्लास्टिक बैन कर दिया गया है. परमानेंटली प्लास्टिक हैज बीन बैंड नाउ बिकॉज प्लास्टिक एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है. इट एक्चुअली हार्म्स द एनवायरमेंट एंड यू नो किस तरीके से एनिमल्स उसको ईट करते हैं. काउज आप देखते हैं ईट करती हैं, खा जाती हैं अगर आप प्लास्टिक फेंकते हैं तो. सो प्लास्टिक आइटम्स एक ऐसा आइटम्स है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, रिसाइकल नहीं हो सकते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो रिसेंटली अगर आप देखें तो प्लास्टिक को बैन कर दिया है. बहुत ही रिसेंट न्यूज है ये. सिंगल यूज प्लास्टिक जितने भी हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जिनको आप सिर्फ वन टाइम यूज करके और फेंक देते हैं, ऐसे सारे आइटम्स को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट ने. दिस इज द रीसेंट पॉलिसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट.
जो गवर्नमेंट ने निकाली है इन ऑर्डर टू सेव आवर एनवायरमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। सो ऐसी कुछ आप नई नई करंट अफेयर्स पॉलिसी से आप अपने एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग स्कोरिंग गुड मार्क्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी कंट्री में। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरिस, नंदा देवी, नोक्रे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, दिब्रू, अगस्त्य मलाई, then you can see Kanchenjunga, Pachmadi, then also you can see this Amarkantak, ठीक है। So these are your 14 bio reserves that you can see over here. Migratory birds हमने पहले भी डिस्कस करी है। Some of the wetlands of India are popular with migratory birds. During winter, birds such as Siberian crane, they come in large numbers. One such place favorable with birds is the run of Kutch. हर साल आप देखेंगे run of Kutch में बहुत सारी migratory birds आते हैं। हमने चिलिका लेक के बारे में बात करी थी, अगर आप भूले नहीं है तो। At a place where the desert merges with the sea, flamingo with their brilliant pink plumage come in thousands to build nest mound from the salty mud and raise their young ones. It is one among many extraordinary sights in the country. So is it not a very rich natural heritage of our country? क्या ये बहुत natural heritage नहीं है? जितना आपको देखने में अच्छा लगता है उतना ही आप देखेंगे इसकी इतनी सारी varieties है, and it needs to be protected. प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी तो आपकी आने वाली जनरेशन इन सब चीजों को देख पाएंगी, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट टॉपिक ऑल्सो, दैट इज योर वाइल्ड लाइफ। हमने वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक आपका फिनिश कर लिया है, एंड दिस इज ऑल्सो द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आपके यहाँ पर एक मैप दे रखा है पेज नंबर 49 वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स पर। ये मैप आप जरा ध्यान से देखें, इस मैप में आप इंडेक्स देखेंगे, सो इंडेक्स विल लेट यू नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। कहाँ नेशनल पार्क हैं, कहाँ आप देख सकते हैं बर्ड सेंचुरीज हैं। ये मार्क्स, ये पॉइंट्स, ये सिंबल्स आप देखें, सो यू कैन सी रणथंबोर, ठीक है। देन ऑल्सो यू कैन सी हियर कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, यू हैव काजीरंगा, these all are the national parks. Then also you can see the bird sanctuaries, that is a start। यहाँ देखिए, this is your bird sanctuary, ये आपकी bird sanctuaries हैं, ठीक है। Then you have wildlife sanctuaries that you can see in here, Mudumalai। Then you have over here, see these all are your wildlife sanctuaries, Chandraprabha, Sariska वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानदी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये मैप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लोकेट करिए, आपको लोकेशन के लिए दिया जा सकता है, लोकेट कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप, प्लीज डू स्टडी दिस मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करें इस मैप को, अपने एक मैप लीजिए, फिजिकल मैप, उसमें इनको मार्क करिए। So with this we complete our chapter, and now as we just have a look at the chapter that what we have done. We started with the natural vegetation and wildlife. नेचुरल वेजिटेशन हमने कंप्लीट करा, वाइल्ड लाइफ भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। फैक्टर्स डिस्कस करे, डेफिनेशंस डिस्कस करी फ्लोरा फौना की। देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग अबाउट इकोसिस्टम क्या होता है। डिस्टर्ब करना है आपको इकोसिस्टम को तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हमने देखा। वेजिटेशन की टाइप्स हमने डिस्कस करे, even we revise the types of vegetation. This map is again very important, I have discussed with you. Again, moving further ahead, we completed the types of vegetation. We discussed about medicinal plants and its importance, इनकी क्या importance होती है। We moved ahead discussing the today's topic, that is wildlife, और wildlife हम finish करते हैं आज। कौन से animals कहाँ मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, please do remember it। हिमालय रीजन में कौन से मिलेंगे, पेनिनसुलर रीजन, रन ऑफ कच्छ साइड आपको कौन से एनिमल्स मिलते हैं, राइट। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात साइड,
आपको कौन कौन एनिमल्स मिलेंगे. सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में यही इम्पोर्टेंट है. And with this, we complete the chapter. See, these are some of the pictures that you can see. जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, सेव vulture टास्क निकाला है, tigers for सरिस्का, you can see. This is how the government works. Keep on working, keep on initiating the campaigns to, save these animals and species. So now we will discuss some of the important questions. हम कुछ questions discuss करते हैं so that you can evaluate yourself and you are able to understand what type of questions can come in your exams. See, so natural vegetation and wildlife. Very basic questions that we have already completed. I'll be just reading out the question. You can see the answer. India's position with reference to plant diversity. ये हमने cover करा है. How many plant species are found in India? Define the following terms. आप इन following terms को define करें. Flora, fauna, virgin vegetation क्या होती है? ठीक है? Then we have what is the meaning of flora and fauna? How is India rich in its flora and fauna? Explain. आपको ये terms की meaning बताना है. Flora क्या होता है? Fauna क्या होता है? ठीक है? Then you have to explain how India is very much rich in its flora and fauna. तो जब आप ये आंसर देखेंगे, so what you will tell, India is rich in its flora and fauna in the following ways. With about 47,000 plant species, हमारी आप पूरा का पूरा यहाँ डेटा लिखेंगे कि हमारी कंट्री में प्लांट स्पीशीज इतने हैं, एनिमल स्पीशीज इतने हैं. देन यू विल राइट कि आपको ये प्लांट स्पीशीज पार्ट ऑफ द कंट्री में कहाँ कहाँ मिलते हैं, एनिमल स्पीशीज आपको कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री में कहाँ मिलते हैं. सो दिस वे यू कैन राइट दिस आंसर. Then next question देखें, what is natural vegetation? List down the 4 types of vegetation identified in India. हमने आप देख सकते हैं कि हमने types of vegetation पढ़ी है, उसमें से आपको कोई सी भी यहाँ 4 types लिखने हैं and you have to tell what is natural vegetation. Then name any 2 relief features that affect the vegetation of an area. Relief feature की बात करी जा रही है. So land and soil. Does soil affect the flora and fauna? Give any 3 examples to support your answer. Yes, soil affect करती है. Flora and fauna को कैसे affect करती है? Sandy soils, desert region, वहां आप देखेंगे आपको cactus, thorny bushes मिलेंगे. Wet, marshy, deltic soil में आपको mangrove type of vegetations मिलेगी. Hill slopes पर आपको conical trees मिलेंगे. So this is how you see soil also affects the vegetation of an area. Climate. Name any 2 climatic factors affecting the flora and fauna. Temperature, photo period, precipitation. आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं. Which type of monsoon bring almost the entire rainfall in India? ये हम already करके आए हैं. That is your southwest monsoon. Why is the vegetation cover of India in large parts no more natural in the real sense? This is because it has been degraded by human occupancy. Because majorly आप देखते हैं कि humans clear कर देते हैं areas जहां पर वो खुद के रहने के लिए जगह बना लेते हैं. सो दिस इज वाई जो वेजिटेशन कवर है इंडिया का वो कम रिड्यूस होता जा रहा है. देन वी हैव टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. क्वेश्चंस ऑन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. Types of vegetation, so we can see, name the most common variety of trees found in mangrove forest. Sundari tree. Name any 2 animals of mangrove forest. See, तो vegetation पर से इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको एनिमल्स पता होने चाहिए. What is the average height of trees in tropical rainforest? 60 meters. In which state the moist deciduous forest is found? Already mentioned and talked about. Name any 2 main plant species of thorn forest. Name any 2 states of India where thorn forests are found. Silver fir, junipers, pine, birches. These are common trees which are found in which type of forest? Montane forest, right? So I have already given you all the pointers. हमने सारे pointers discuss करेंगे. Which trees grow in the montane forest? Montane forest में कौन से trees grow करते हैं? Which type of forest is found in Ganga Brahmaputra delta? कौन से आपको type of forest मिलेंगे? So you have to go through very nicely through all the types of vegetation. बहुत अच्छे से आपको cover करनी है so that you can answer all these pointers. आप इन pointers को answer कर सकें. ठीक है? So these are some of the important questions that you can go through.
आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। I'm just showing you once again. See the questions. वेजिटेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। नेचुरल वेजिटेशन में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेजर टॉपिक है, आपको सारी वेजिटेशन याद होनी चाहिए। सो आप टेबल फॉर्मेट में याद करेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न एंड कीप इन माइंड। Then you can see some more questions. Why is natural vegetation in India disappearing rapidly? Describe any 5 reasons. ऐसे reasons पूछे जाते हैं कि आप बताइए हमारी कंट्री की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्यों इतना ज्यादा रिड्यूस हो रही है? Why it is actually disappearing? So you can see growing demand for cultivation requires more land. कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी है और लैंड चाहिए, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाते हैं। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, इस वजह से फॉरेस्ट कट करे जाते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज होती है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द पैस्चर्स। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वेजिटेशन कवर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। Ecosystem, how do human beings create ecological imbalance? Obviously, by cutting the trees, killing the animals. Then what is a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and wildlife called as biome? Please do remember this, very very important. Biome क्या होता है? पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक आपको डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर मिलता है एंड दैट इज योर बायोम। So I hope this has made sense to you. With this, we complete your class 9th geography, chapter number 5, natural vegetation and wildlife. Now I give you 2 minutes. Do have a look to these exercise questions and quickly solve these questions. ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इनको फटाफट देखिए। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes. Then we'll discuss the answers. Quickly discuss. Quickly. You have to mark. Just go through these questions. Giving you 2 minutes, read the question and quickly tick mark. Quickly tick mark the answers. We'll be discussing them. Are you getting the answers? Just giving you 2 minutes to write and mark, tick mark all the answers. Also see these questions. Answer the following questions in brief. ये questions भी आप देखें. See, define an ecosystem. What factors are responsible for the distribution of plants and animals in India? क्या क्या factors responsible होते हैं? ये हम factors discuss करके आए हैं। बायो रिजर्व्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स दीजिए। नेम टू एनिमल हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड मॉन्टेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, आपको एनिमल्स के नेम बताने हैं। देन यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस, दोनों का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं, ऑन द अदर हैंड डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव्स शेड करते हैं। ठीक है। Name different type of vegetations found in India and describe the vegetation of high altitudes. Quite a few species of plants and animals are endangered. Q. Why has India has a rich heritage of flora and fauna? क्या reason है? Also, please do practice this map skill. Areas of evergreen forest mark करें. Areas of dry deciduous forest. Two national parks, each in northern, southern, eastern and western part of the country. ये प्लीज मार्क करें, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है। मैप एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
Write down the answers of all these questions. So have you ticked the answers? Question number 1, to which one of the following type of vegetation does rubber belong to? रबर आपको कहां पर मिलेगा, कौन से फॉरेस्ट में मिलेगा? Tropical evergreen forest. Then you can see cinchona trees are found in the areas of rainfall more than 100 centimeters. In which one of the following state is the Simlipal Bioreserve located? अगर आप मैप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन कहाँ है. देखिए जरा कहाँ है सिमलीपाल बायो रिजर्व. सिमलीपाल बायो रिजर्व. ओके, इट्स नॉट गिवन इन द मैप. ये यहाँ आपके बॉक्स में लिखा हुआ था. इट्स रिटन इन द साइड बॉक्स. साइड बॉक्स जो था उसमें ये मेंशन है आपके. हियर सिमलीपाल कहां पर है? वेयर इज इट? पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली और वेस्ट बंगाल? It's in Odisha. Then which one of the following bioreserves of India is not included in the world network of bioreserves? वहां नाम लिखे हुए थे और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बायो रिजर्व का पार्ट नहीं है. मानस, ठीक है. सो प्लीज अपने आंसर्स चेक कर लें. जो भी आपने आंसर्स टिक करे हैं, प्लीज चेक योर आंसर्स. So thank you everyone. Have a good day. With this, we complete your class 9th, chapter 5, natural vegetation and wildlife. Thank you. Good day. Keep learning.